मुझे I want this. ये आ गया। अच्छा वो जनता भाई हो गया वो लैपटॉप पे Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. I am Rabia Ahmed, manager of trainings at Innovista. आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला है. Your summer vacations have just begun and I see a lot of happy smiling faces that you have turned up today. So a big round of applause for you. Shows your enthusiasm for learning. So बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं. You're going to have fun. This is a very, very interesting series of workshops that we do every year. And we're going to tell you in detail कि ये workshop क्या है और इसमें कौन-कौन से modules हैं. तो आप लोगों को आज बुलाने का मकसद ये था कि you should have an insight into what this whole program is all about, ताकि जब आप इसको करें तो आपको पता चले कि what this structure is all about. So before we begin, मैं दावत दूंगी मुर्तजा who has joined us for internship के आके तिलावत कलाम पाक करें. बहुत शुक्रिया. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. Jazakallah Murtaza. So before we begin, we would like to give you an overview of this program. इस program को हम लोगों ने 2 साल से start किया है and we've implemented it about 4 times. So starting this series, we would like to give you, some pictures. If we could share some pictures. And some snippets and some reels कि आपको पता चले कि किस किस्म का program होता है, ये कैसी series of workshops हैं. So it will give you a sense of idea. Like they say, a picture is worth 1,000 words. तो ये आपसे हम थोड़ी सी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि हमारी बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर है. जिस तरह मैंने सुबह भी स्टूडेंट से कुछ बात की, इट्स नॉट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट. We expect you to be relaxed,
to be chilled out. Of course collaboration है, तो आप लोग respectfully बैठेंगे, एक दूसरे की space को respect करेंगे, but it's going to be very much fun. आप एक दूसरे को help out करेंगे. So you can see the instructors. This is our CEO interacting with the students. हमारे director साहब भी बैठे हुए हैं. So it's very hands-on. People are working together. ये हमारी पिछले साल दिसंबर में जो टेक वेंचर वर्कशॉप हुई थी. सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, यू नो, दे आर शोकेसिंग देयर वर्क. सो ये बिकॉज इट्स वेरी डिलीवरेबल ओरिएंटेड. आप देखेंगे कि आप 2 से 3 दिनों में एक डिलीवरेबल बनाएंगे. सो टाइटल ऑफ द वर्कशॉप टेल्स यू कि आपका डिलीवरेबल क्या है. बिल्ड योर गेमिंग ऐप. तो गेमिंग ऐप आपकी बन जाएगी. सो हम शोकेस करेंगे. तो शोकेस में आप देख रहे हैं कि इस बच्चे अपनी गेमिंग ऐप दिखा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंड December 25. एंड मे बी अनदर रील. ये हमने पिक्चर्स देख ली हैं और हमें कोई रील्स दिखा दें आप. So this was our AI assisted novel writing. ये सिर्फ इनोविस्टा में ही होता है. This is our flagship workshop. This is very interesting. This is a workshop where creative writing and AI is, you know, meets together. And at an expedited pace आप अपनी एक नॉवल लिखते हैं. सो नॉवल राइटिंग जो है वो एक सालों की काविश होती है. और हम क्या करते हैं कि हम बच्चों से उनकी क्रिएटिव प्रोसेस, उनकी क्रिएटिविटी को यूज करके हम उनसे खुद उनकी स्टोरी लाइंस और प्लॉट्स यूज करते हैं. एंड देन putting it on the vehicle of AI, we have proper novels at the end of the workshop in 4 or 5 days. आप अपने खुद से प्लॉट्स बनाते हैं, आप कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट करते हैं. So this is the kind of work we do. You can see. So very hands-on. Students are discussing their storylines, telling about their, you know, characters, you know, और वहां हम आपको help out करते हैं. देख रहे हैं आप यहाँ से, starting with writing it down. So we're not putting you on, you know, the vehicle of AI instantly. This is our mentor. And this most interesting part is students who were a part of this workshop, you know, when Tech Venture series of workshops started, they became co-instructors. So जो आपने देखी है मानूर की तस्वीर दोबारा से दिखाएं जी. ये दोबारा से दिखाएं. मानूर was our student in the first workshop. और मानूर ने हमारे साथ नॉवल लिखा. And then मानूर became an intern at Innovista. और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ इसको को-इंस्ट्रक्ट किया. सो द ब्यूटी इज कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज इस वर्कशॉप का हिस्सा हैं, कल वो हमें हेल्प करेंगे इन कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप. दिस इज हाउ एम्पावर्ड वी मेक यू, दैट यू बिकम प्रोफिशिएंट इन अ सर्टेन एरिया. तो आज अगर आप रजिस्टर किए हुए हैं फॉर गेम डेवलपमेंट, you can be so, you know, proficient in developing your own game app के next tech venture की series में you will be standing here with the instructor and you will be developing different gaming apps with the students. So this is the power of tech venture. आप देख सकते हैं मानूर was our first student in the workshop and she is so confident and she will be joining us again this time and she will be you know, doing the workshop. This time it will be Harry Potter inspired series of work, you know, a Harry Potter inspired novella. तो जिसने हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ी हुई है उसको हम कहेंगे कि आप हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स और सेटिंग्स को यूज करके अपनी स्टोरी लिखें. ठीक है जी. So we've seen this reel. आगे बताएं. शायद I requested कि repetition now please.
So this is Osama. Osama आपके साथ काम करेंगे जी वाइब कोडिंग में, which through using vibe coding आप game development करेंगे. So Osama and Taha are there. Osama, please आप join कर लें हमें. So Osama आपके साथ hands on काम करेंगे, आपको vibe coding सिखाएंगे, because like they say, today you don't need to be proficient in a lower level language. अब higher level language का जमाना है, और सबसे highest level language क्या है? Natural language, English. So you will be coding in English, और आप सीखेंगे vibe coding, और आप अंग्रेजी जबान में prompts लिख के कमाल की आप गेमिंग एप्स बनाएंगे. So just sharing with you some snippets and some pictures and reels from our workshops in the previous years. Very hands-on, very immersive, relaxed. आपके साथ हर बच्चे के साथ हम उसका आइडिया जनरेट करते हैं, उसके साथ मिलके काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका एक डिलीवरेबल निकले जो कि हम शोकेस करेंगे. So showcase is a very important part. So we will work tirelessly with you. We will try very much कि आपका एक deliverable हो at the end of the workshop. So we just don't want to come here and instruct. We want to work with you कि आपका एक deliverable हो. हमारी पूरी कोशिश होगी. So this is a very deliverable oriented series of workshops. आप लोगों में से सबसे रिक्वेस्ट होगी that you please bring your laptops with you, because we get into work tomorrow 10:30 sharp. ठीक है जी, आप अपने साथ चार्ज अपने लैपटॉप्स लेके आएंगे, और अपने साथ लेके आएंगे अपने your batteries so that you can charge. Try if you can bring an extension wire with you too, or otherwise we can request Maha अगर आप भी provide कर सकें. But we would like to get into work tomorrow at 10:30 sharp. Ji, I think we're done with the reels. Ji, thank you so much. Ji, so now we can begin our slide deck. Ji, so about the Tech Venture series of workshop or the summer camp, like I said, it's very deliverable oriented. Deliverable से मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि हर वर्कशॉप के एंड में आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, कोई प्रोटोटाइप हो, कोई रिजल्ट हो that you can showcase. We will try our utmost best कि हम आपके साथ बहुत closely काम करके वो हम चीज निकालें. ठीक है जी? So every module ends with a real tangible output, not just theory or exposure. This is how we differentiate ourselves, because workshop का मतलब ही ये होता है हाथ से काम करना और कोई चीज बनाना. So this is what we do. So execution led learning, students build working apps. जिस तरह आप बनाएंगे, आप chatbot बनाएंगे, आप gaming app बनाएंगे, आप tools बना सकते हैं. So you can build a habit builder, or you can make a, जो for example मैंने ओसामा के साथ मिलके मैंने गेमिंग ऐप बनाई. बैक इन आवर डे पैकमैन वाज अ गेमिंग ऐप. बहुत एक गेम हम खेलते थे. सो आई मेड अ गेमिंग ऐप पैकमैन. आप चेकआउट कीजिएगा, वेरी सिंपल गेमिंग ऐप. सो आई डिड दैट. सो आप बैठ के सोचें व्हाट नॉवल गेमिंग ऐप यू वांट टू मेक, सो यू कैन डू दैट. सो बहुत फोकस्ड मॉड्यूल्स हैं हमारे, and you can choose which module you want to do. So I would really suggest you कि आप लोग सारे modules में apply ना करें. Choose the modules. आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से modules हैं, हमारे posts में भी आए हुए हैं. But I would suggest choose the module that resonates with you, that sits with your heart, जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है. ठीक है? So choose 2, choose 3, but then work
very intensely in that. जो आपको अच्छा लगे वो करें, सारे नहीं करने. I like your enthusiasm, but choose few. ठीक है? Choose 4. And then we are going to give you a certification, which is going to acknowledge your effort and the product that you have made. वो आपको end of the workshop series हम आपको देंगे, right? आपको थोड़ा सा हम अपने मॉड्यूल्स की ओवरव्यू दे दें और हमारा स्केड्यूल भी हम आपको बताते जाएंगे. सो द प्रोग्राम स्टार्ट्स टुमारो विथ द गेमिंग ऐप डेवलपमेंट. आप देखेंगे हमने टाइटल में कोशिश की कि टाइटल में ही डिलीवरेबल आप आइडेंटिफाई कर सकें. सो गेमिंग ऐप विद वाइब कोडिंग, कैन यू आइडेंटिफाई द डिलीवरेबल? एक्सीलेंट, गेमिंग ऐप हम बनाएंगे. सो कल से इंशाल्लाह वर्कशॉप शुरू हो जाएगी. यू कैन आइडेंटिफाई द डिलीवरेबल. इट विल बी अ गेमिंग ऐप और इट कैन बी एनी ऐप. अगर आप समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, सो उसामा हैज गिवन लीवे. हो सकता है आप चाहते हैं कि आपने गेमिंग ऐप नहीं बनानी लेकिन आपने कोई और ऐप बनानी है. सो उसामा इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट उसामा? आप कोई टूल या कोई आप कोई और चीज बना सकते हैं, बट इट विल बी एन ऐप, राइट? So the second will be हमारा second module है build a chatbot with n8n. तो वो भी again Osama and Taha, and they are a very talented software engineer and tech enthusiast duo. हमारे साथ बैठते हैं. They've been associated with Innovista for a long time. So thank you for doing this pro bono again with us. तो ये हमारे साथ काम करते हैं जी, and you're going to have a fantastic time with this team. So Harry Potter novella writing, ये मैं conduct करूंगी with Manur, with my intern Fatima. Fatima, come here. So Fatima is an intern working with us in the trainings department. Fatima has done her bachelor's in literature. So she is going to be working with us in this module. And like I said, creativity and AI assistance. इसके साथ हम आपको Harry Potter assisted novella लिखवाएंगे. So it's going to be very interesting. But the prerequisite for this would be कि आपने Harry Potter की series पढ़ी हुई हो. ठीक है जी? So we are going to be discerning about that. Thank you, Fatima. फोर्थ है जी बड़ा इंटरेस्टिंग, वो है आइडिया टू लॉन्च बिल्ड विथ एआई. सो ये हम बेसिकली स्टार्टअप किट, सर आपने इंटरेस्ट शो किया था उसमें. सो वी आर गोइंग टू बी बिल्डिंग अ स्टार्टअप किट विथ यू. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम आपको थोड़ा सा इसके में डिटेल भी बताएंगे. सो वी हैव अ टीम, बट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट टीम. सो द आइडिया वुड बी टू गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ वी कम अप विथ अ स्टार्टअप. तो आइडिया आप कह लें कि आइडिएशन से लेके फाइनेंशियल्स, मार्केटिंग और आप कह लें कि स्टार्टअप की जो एक पिच है वो वहां तक हम लेके जाएंगे. So this was what we did last year in summer too, and students were able to come up with fantastic ideas. तो मेन चीज ये है कि मार्केट में गैप देखना कि what is the gap in market, what can you offer to the market. तो पहले वो गैप एनालिसिस करके उसके बाद then you come up with a novel idea. That is the main thing. So novelty and then financials, marketing. तो आपने पीछे सारे वो marketing collaterals cover करके then a very solid pitch deck that you come up with, and that is what you showcase. So students were able to come up with fantastic ideas and even come up with a whole website for their startups. तो ये आपका पूरा startup kit बनेगी. So this is rigorous. We saw a lot of students struggling in this because ये एक आप कह लें कि it's a huge undertaking. But diabolically as it may sound, we thought that जो थोड़े बड़े एज के participants थे, which we thought would do better, वो थोड़े से उनके ideas weak थे, and students जो younger थे, their ideas were better, and hence they were able to make a better collateral. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि some of the students came up the idea that I remember, जो मुझे एक दो ideas that I can recall, कि एक आप you go to a say किसी आप as a tourist you go to a place, तो किसी ने एक बताया कि when you sit in a cab, तो उस कैब के पीछे एक for example there would be a device that would give you an overview of all that you can do in that place.
और साथ वो all what you can buy. So you know that device would give you an overview कि इस जगह पे क्या, for example, all what Lahore has to offer, all the tours, all the shopping places that Lahore has to, somebody from abroad has come to Lahore, और वो उस कैब में उसको सब पीछे से डिवाइस ने ऑफर कर दिया है. तो उसने उसकी फाइनेंशियल्स किए, उसके मार्केटिंग की, उसकी कोलैटरल्स बनाए, उसकी वेबसाइट भी बना दी और सॉलिड पिच डेक दिया. ठीक है जी. एंड देन अनदर फास्ट का एक ग्रेजुएट था जो पिछले साल हमारे साथ था, उसने हमें एक और आइडिया दिया रेंट पे बाइक्स का. So he came up with all the financials के you know, if you want to, for example, बाहर के मुल्क में ये होता है कि you know, you see a lot of bikes that you can you know rent out. आपको आप उतरते हैं ट्यूब से और आप देखते हैं कि बहुत सारी bicycles खड़ी हुई हैं, and that you know you just pick up those bicycles and you take off and then you come back. और अब वो तो उसने वो bicycles के लिए भी और bikes के लिए भी एक पूरा उसने एक ऐप बनाई. And this was a graduate of FAST और उसने पूरी उसकी financials, उसका marketing collateral, उसकी website, everything he did that. So it, and somebody, for example, some of the children, उन्होंने कहा जी हम घर से cupcakes बनाएंगे, और उन्होंने cupcakes की और you know different kind of cupcakes, and sir ने बहुत appreciate किया था बल्कि I remember. So this was a girl who said कि जी मैं इस किस्म के cupcakes बनाऊंगी घर से, and this is going to be my differentiation, and this is going to be my marketing collateral, and this is going to be my pricing, and this is going to be my pitch deck. So वो उनको थोड़ा सा एक business sense देना, उनको उनकी marketing की collateral की sense देना, because we make them use AI and come up with their marketing collateral. उनको थोड़ा सा market का gap देना, gap analysis की orientation देना, financials के साथ उनको थोड़ा सा you know let them maneuver with that. So this is basically a startup kit that they come up with, and then they pitch their product, and we analyze how you know solid it is. So that is the kind of thing, because हम देखते हैं कि हमारे academic environment में business orientation नहीं है. So you could think we will discuss it in detail, but business orientation with AI, you know, that is the kind of the startup kit that you would you know come up with. और इस किस्म की आप डोमेन में काम करेंगे. ठीक है जी. So the fourth one will be conducted by Abdullah. Abdullah, अगर आप अपनी शक्ल दिखा दें, इसके बाद आप नहीं, you will come and explain your module in detail. So Abdullah is our expert in video editing and storytelling, and there's so much he does, all the creative stuff in Invista. There is Abdullah behind this. तो अब्दुल्ला ने ये एक मॉड्यूल क्यूरेट किया है कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो 14 अगस्त की थीम को यूज करके आप बहुत मजेदार रील्स बनाएंगे. Maha, I can trust you to keep order in that section of the hall. So अब्दुल्ला जो है उन्होंने ये एक आइडिया बनाया है कि इंडिपेंडेंस डे की आप थीम को यूज करेंगे, एंड देन यू विल यूज कैपकट और आप मजेदार किस्म की रील्स बनाएंगे. सो अब्दुल्ला इज गोइंग टू बी द इंस्ट्रक्टर, आप कैपकट यूज करेंगे और आपको हम वी आर गोइंग टू गिव यू फ्री रेन. आप इनविस्टा की प्रेमिसेस में आप वीडियो बनाएं, आप एआई को यूज करें. अब्दुल्ला शायद आप पार्क में भी ले जाएंगे इनको. सो यू कैन डू दैट. So you can, you know, आप raw footages बनाएंगे, उसको use करेंगे, and you come up with good storytelling, और Independence Day की आप theme से एक reel बनाएंगे. This is going to be very, very interesting. Abdullah detail में बताएंगे जब when the module comes. Thank you, Abdullah. And then 3D headphones in Blender. We have Vaina. Vaina, you have such an unusual name. So Vaina is going to do this with you. Ji, Vaina, I will acknowledge my ignorance about your module. So Vaina will tell you in this, when we you know, discuss it in detail. All I know is that this is 3D modeling and this is real tech stuff. ठीक है जी. तो ये जब Vaina अपने module पे आएंगी तो आपको detail में बताएंगी. But this involves sketching. 3D modeling में will you start with sketching? Okay, ठीक. ठीक है, तो आप डिटेल में बताइएगा. ठीक है जी, जब आप वाइना का मॉड्यूल आता है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आ जाएं जी. ओके, सो डू वी हैव द अदर फातिमा हियर?
it's all right. So design your own t-shirt using Canva. So this is going to be fantastic because आप Canva को use करेंगे और आप एक t-shirt design करेंगे. So we have a very talented, techie person here जो कि Canva को use करके आपसे t-shirts बनवाएंगी और हम चाहेंगे कि वो t-shirt वो आपकी print हो जाए. So you wear the t-shirt on the showcase. So using your ingenuity, your color schemes, your ideas, आप अपनी एक t-shirt design करेंगे और आप showcase पे वो t-shirt पहन के आए या अपने साथ लेके आए, however you like it. So that's going to be a fantastic module as well. And lastly, UX Explorers design a website. So we have our UI UX expert. He's an engineer at the Sham who works with us at Innovista. So Etisham knows UI UX in and out. So he knows, it seamlessly. So what he's going to do is, आपको डिटेल में अपना मॉड्यूल समझाएंगे, लेकिन आपको basically differentiate करना बताएंगे between a good website and a bad website. And what is a good design and a bad design? क्योंकि आजकल वेबसाइट बनाना तो कोई शायद इतनी बड़ी बात नहीं है. But he will tell you what entails a good design. ठीक है जी? So this is going to be a fantastic module because what is going to elevate your website is the design features. तो वो आपको एक UI UX perspective से एक अच्छी website बनाना सिखाएंगे. ठीक है? Of course, with your ideas, with what resonates with you, and he's going to tell it in detail as to what he is going to do when his slide comes. ठीक है जी? Thank you so much, Etisham. बहुत शुक्रिया. Right. So now we come to each module. और मैं थोड़ा सा एक skimming view आपको देके, so I'm going to give over this to the instructor and requesting each instructor to take not more than 2 to 3 minutes. But before that, I would like to invite our director of, ताकि वो थोड़ा सा हमें बताएं कि what our Tech Venture series of workshops are and what his vision is for this program जी. तो sir please आप आइएगा. Thank you so much जी. I hope you can hear me at the back. सबसे पहले तो जो आप लोग यहाँ पे आए इनोवेस्टा की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं. इनोवेस्टा की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं. लगा दें सर को. सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं इनोवेस्टा की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे जो बड़े हैं उनकी तरफ से आपको हम वेलकम करते हैं. यहाँ पे मैम राबिया का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको शी हैज़ एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. और इसका जो मकसद है वो आप देखिए कि आप बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि छुट्टियां हैं, यू मस्ट बी वांटेड टू गोइंग आउट, यू मस्ट बी वांटेड टू गो टू एंजॉय योर हॉलीडेज. लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, आई कैन अश्योर यू कि जो हमारी टीम की एफर्ट होगी, यू विल लर्न समथिंग एंड यू विल नॉट रिग्रेट दैट यू हैव स्पेयर्ड योर टाइम बाय कमिंग ओवर हियर. ये इनिशियल जो है आपको थोड़ा सा ज़ाहिर है इसका बताना कि this is not only you who are sitting here to attend this workshop. इस वर्कशॉप के लिए हमारे पास maybe somebody is there from AJK and GB, maybe somebody is there from Quetta, maybe somebody is there from Karachi, Hyderabad, or KPK, or many parts of this Pakistan. ये हमने इसमें बड़ी lot of effort has been put in by Ma'am Rabia and her team, और हमारी भी जो बाकी सारी टीम है. You can see कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलमोस्ट उनसे 1/4 जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं. तो दिस ऑल इज फ्री फॉर यू, तो यू मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ इनोवेस्टा, हमारी जो टीम और हमारे जो बाकी बड़े हैं, कि हम दिस ऑल इज फ्री फॉर यू ना. और पर्पस क्या है, एम क्या है? द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द डिग्रीज दे आर गोइंग टू बी may not be of that use. A time will come that people will be inclined more towards the skills learning, skills development,
and degrees that may not be of that value. Of course, degrees important hain, but time is coming that the governments have also. Yesterday we were there in a program in Islamabad. The federal minister for IT, they were there. The major partners from the industry were there. The reps of the Google in Pakistan, they were there. So everybody realized that the time has come that we have to incorporate the skill development in our degree programs. So, beta, and the parents also, this program has been curated just because to give you a just insight and just a tip of the iceberg. एक डायरेक्शन आपको देनी है कि भाई ये आप स्किल डेवलपमेंट की ये फील्ड्स हैं. अगर आप देखें तो these all lead towards the earning. आप अगर एक अच्छी बुक लिखना शुरू हो जाएं, यू स्टार्ट अर्निंग. अगर आप एक गेम डेवलपमेंट बना लें, यू स्टार्ट अर्निंग. आपकी जो बाकी उन्होंने एआई के मदद से आपको बताया कि स्टार्टअप्स हैं, ये जितने मैम ने भी जैसे बताया कि अगर आप एक अच्छी ऐप बना लें, एक अच्छी रील बना लें, आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ सीख लें, तो यू स्टार्ट अर्निंग. और 50%, मे बी मोर देन 50% आउट ऑफ अस, दे गो टू द डिग्रीज जस्ट बिकॉज के आखिर में उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू गो फॉर द अर्निंग. उन्होंने अपना ब्रेड एंड बटर रन करना है. तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक तो यहाँ पे वंस यू कम, स्पेस का थोड़ा सा मे बी इशू हो बिकॉज द रिस्पॉन्स इज, मैम बहुत ज्यादा है रिस्पॉन्स, ऐसे ही है ना. We expected that maybe 170 to 80 maybe students will be there in one module, but the response is huge because of our previous deliverables we have given. ये आपको मैम ने बताया हमारी 4th ही टेक वेंचर है. तो जो बच्चे यहाँ से होके गए उन्होंने बताया कि इट इज़ वेरी यूजफुल. तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि यहाँ पे जाहिर है आप लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, बीच में यंग भी हैं, तो instead of interacting or making a noise or amongst yourself, just go to the trainer or just go to listen to what she is or he is teaching to others. वहां से आप अपना वो कर लें. बट आपस में आप बोलेंगे तो जो ट्रेनर हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होंगे. तो मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं जी. इंशाल्लाह ताला आप, मैम ने भी जैसे कहा कि फोकस करें जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, नॉट मोर देन 4 आई थिंक, है ना, नॉट 3 to 4. आप यू कैन नॉट डू, मतलब होता है ना कि आप, everybody cannot be the master of all trades. One can be jack of all trades but master of none. ऐसा ना करें. ये अपने अपनी हर बच्चे की अपनी स्किल है, उसका किस तरफ उसका इंटरेस्ट है. अगर आपका इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट है, जस्ट अटेंड दैट, और साथ 2-3 और आप उससे रिलेटेड सीख लें. बट ये हमने जो क्यूरेट किए हैं हमारी टीम ने, इट इज फॉर डिफरेंट पीपल, इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. ताकि आप डिफरेंट बच्चे आएंगे, बच्चे अगर आपके जो ट्रेनर के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ अपने इंटरेस्ट की चीज करेंगे तो दे विल लर्न मोर. इंस्टेड के इसमें कोई ऐसा वो मार्क्स इसके ज्यादा या वो नहीं है कि जी मैंने पूरे के 2 महीने मैंने जाके तो वो अटेंड किया है. बट इफ यू लर्न 1 or 2 skills and you focus on that, तो you dwell on that, that will be very beneficial for you. कल हम जहाँ पे थे, एक मैम, वो जो हमारा जो इवेंट था कल, हम yesterday we went there, वहां पे जो मैम ने बताया बिल्कुल इसी तरह स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड, ये जो उन्होंने बाइक का आइडिया बताया, मोटर बाइक का एक गेम इन्होंने, जैसे वो पैकमैन की बात की, इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज बच्चों ने स्टार्ट में लिए. दे वर वेरी यंग किड्स और फ्यू केम फ्रॉम कराची, फ्रॉम लाहौर, और उसमें यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द पार्टनर्स. वी एम्पावर द स्टूडेंट्स, और हमने वो एक एंटी ग्रेविटी का एक हैकाथॉन करवाया. हमारे भी कुछ ट्रेंड बच्चे थे, and yesterday they went there, और जो फर्स्ट प्राइज था it was 1 million rupees, only 2 students, 2 बच्चों का स्टार्टअप था, और इस्लामाबाद में they got 1 million rupees. The second they got 650,000, the third 350,000. तो इसी तरह के छोटे छोटे आइडियाज थे. इन्हीं चीजों से, जैसे आज ये यहाँ पे छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इसी तरह की किसी जगह से उन्होंने दे टुक स्टार्ट, वहां से उन्होंने सीखा और दे इम्प्लीमेंटेड इट. तो बेटा इसके अंदर देयर इज लॉट ऑफ जूस, देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे बड़े अपॉर्चुनिटी है आगे सीखने की. और कोशिश करें, घर जाके डिसाइड करें कि वॉट एवर मॉड्यूल यू हैव द इंटरेस्ट, उसको आप फॉलो करें. हमारी टीम जो है दैट विल बी देयर, वी विल बी देयर. मैम राबिया ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसको क्यूरेट करने में, इसको बनाने में. हमारी टीम, आपने देख लिया जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो सारे के सारे इंटर्नीज थे.
नोबडी इज, मेरा ख्याल है एक दो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, शायद अब्दुल्ला और वो, बाकी तो आपने सारे यहाँ से ही स्टूडेंट्स लिए हैं, यहाँ से इन्होंने सीखा है और दे आर हेयर। तो आप में से भी कल को मे बी कोई एक या दो या तीन बच्चे हम नेक्स्ट टेक वेंचर के लिए यहाँ पे स्टेज पे आए और बाकियों को सिखाएं। तो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का, मैं नाम नहीं लेता, दोज हु आर ऑनलाइन, हमारे जो FGI स्कूल सिस्टम्स है उनके स्टूडेंट्स और उनकी टीचर्स और उनके लोग हमारे साथ, उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे आर ऑनलाइन। एपसेक्स जो है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस का जो सेक्रेटेरिएट और उनकी जो टीम्स हैं, दे आर ऑनलाइन, दे आर विद अस, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा जरार कैंप, बाकी इधर IT सेंटर्स हैं, कुछ कोयटा और कुछ GB से डिफरेंट लोग हैं, दे आर ऑनलाइन, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आई एम श्योर कि ये जो इंटरेक्टिव सेशन था आज, ओरिएंटेशन सेशन था, इससे आपको एक इनसाइट मिल गई है कि कैसे आपने अपने बच्चों को लेके जाना है। दोज हु आर देयर ऑनलाइन, आप यही अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अपने एक किसी हॉल में अपने स्टूडेंट्स को वहां पे बुला लें, एपसेक्स और FGIs के और IT सेंटर्स के रिस्पेक्टिव में। और हमारा जो ऑनलाइन यहाँ पे होगा, आपका एक somebody should be there जो कि उनको कंट्रोल करे, और वो उस हॉल में ऑनलाइन ये सारा दे विल बी एबल टू सी इट। हमारी ये रिकॉर्डिंग भी होगी मैम, आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको फिर जो एनीबॉडी हु हैज मिस्ड इट, हमारे जो सलमान, आप उनको ये वीडियो भी दे सकते हैं। और आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे, जब भी आप डोंट थिंक इट इज जस्ट 2 डे वन पैकेज और 2 डे और 3 डेज और 4 डेज, बट मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल अपनी एग्जांपल बताता हूँ। माय डॉटर एंड माय सन, एक साल पहले मैम, एक साल पहले उन्होंने ये मैम के साथ ये जो बुक राइटिंग वाला है, दे अटेंडेड जस्ट फॉर 3 डेज, एंड माय डॉटर रोट अ बुक ऑफ 80 पेजेस एंड सन रोट अ बुक ऑफ 60 पेजेस। और ये बिल्कुल आपको पूरा तरीका भी मैम बताती हैं, ये बड़ा अच्छा इनका इंटरेस्टिंग है, कंटेंट राइटिंग और बुक राइटिंग वाला। तो विद इन 3 डेज और 4 डेज जी, और वो उस स्टैंडर्ड की है कि दैट कैन बी पब्लिश्ड ऑन Amazon और जो भी किंडल जो भी वो है, ये स्टैंडर्ड्स आपको वो सारे बताते हैं। एंड इट इज वेरी चीप, बच्चों के पॉकेट के अंदर रहते हुए उसकी आई थिंक वो जो पब्लिशिंग प्राइस है मैम ने वो उसका वो एडजस्ट किया हुआ है। इनके साथ इनके मेंटोर्स भी होते हैं और बाकी, तो इंशाल्लाह ताला जी इट विल बी रिवॉर्डिंग। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, हमारी टीम का इंशाल्लाह ताला। मैम आपका बहुत शुक्रिया, यू हैव कम फ्रॉम, आप वहां से वापस आई और आज का आपने सेशन जो है ना वो इंश्योर किया। शी वाज ऑन लीव, किसी खास उधर से वापस आई हैं हमारी सारी टीम, अब्दुल्ला, एहतशाम, शाहिद, सारे, सलमान। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैम आप प्लीज कंटिन्यू करेंगे इसको, थैंक यू। मैंने जरा जाना था इसलिए मैंने कहा मुझे पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वो चीज हो जाए, ठीक है, अपने गैजेट के चार्ज टू, बिकॉज हमारे पास एक्सटेंशन हम एक तो प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्यादा प्रोवाइड करना ओके मुश्किल। जी, so thank you to the online participants जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, Sir Naveed, who is our Director Ops, and Sir Salman. They've played a pivotal role in disseminating this workshop to APSECs, FGEIs, and other entities. तो बहुत शुक्रिया, हमें about 300 participants देख रहे हैं online. I'm very grateful to all of you जिन्होंने हमें online join किया है. Just a few instructions that I was asked to share by our community manager, Madam Maha. आप उनसे interact करेंगे हर रोज. तो बच्चों, आप लोगों को जिन्होंने इसको on premises join किया है, you are supposed to be here a little before 10:30 because the workshop is going to start sharply at 10:30. ठीक है जी? तो आपने ensure करना है that you are seated here at 10:20 max. ठीक है? 10:30 हम अपनी workshop start कर देंगे. Nobody is going to be accommodated. This is what Madam Maha is saying. Madam Maha is a teacher and former teacher.
और थोड़ी सी हार्ड टास्क मास्टर है. So she's saying nobody is going to be accommodated if they turn up later than 10:30. So she's saying 10:25 she's going to be closing the gates. तो आप लोगों ने कोशिश करनी है that you're going to that you turn up here before, on time, right? And she's also requesting that everybody should have their devices charged. She's saying कि एक आध या दो extension wires तो वो दे सकती हैं. So try कि आप लोग अपने devices charge करके ले आएं. There are some charging points here. And we do realize कि 2 hours में कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है, but try to come with charged laptops because this is going to be very hands-on. आवाज आ रही है जी at the back? So this is going to be very hands-on और आप काम करेंगे साथ-साथ. So ये lecture oriented नहीं होगा. उसामा अभी आपको बताएंगे. So it's going to be very hands-on, immersive. आप फौरन काम करना शुरू कर देंगे. सही है? So try to have your laptops charged. Any other instruction, Maha? Ma'am, it would be appreciated कि अगर 10:30 to 12:30 है तो by 12:45 आप लोगों ने अपने घरों में बताया हो so that they can leave safely. Okay, so ma'am, Maha is also requesting that anybody who's going to pick you up, your drivers and your mother and your father, they pick you up on time, right? So ये 2-3 housekeeping की instructions थी. Any other thing, Maha? One thing I would request कि जो ऊपर से बच्चे एंटर हो रहे हैं रिसेप्शन से, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, ऊपर वाली रिसेप्शन पे आपकी अटेंडेंस मार्क होती है. Right. Yes, very important. अगर अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपका टाइम जाया हो जाएगा. फिर आपकी अटेंडेंस ऊपर मार्क होना लाजमी है. Yes, so front desk पे हम आपकी attendance mark कर रहे हैं. So try कि आप quietly जब आप आएं तो आप अपनी सुबह attendance mark करवा लें because this is what we've requested, Madam Maha, कि आप front desk पे आपकी attendance mark हो जाएगी. So your attendance is mandatory. We would request कि आप attendance हो throughout the module because that is the only thing that is mandatory for you to earn your certificate. ठीक है? Of course हम आपका deliverable भी देखेंगे, but that is the only thing we require of you. If you do not turn up, या अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज हो जाती है unforeseen, so we will, see to that. But try your best to be here. 2 से 3 दिन की वर्कशॉप है जिसमें हम आपसे एक डिलीवरेबल बनवाते हैं. कोशिश पूरी करें कि आप अगर ऑन प्रेमिसेस हैं रजिस्टर्ड, सो प्लीज डू कम. अदरवाइज आपको हम फिर नहीं सर्टिफिकेट दे सकेंगे. सो योर अटेंडेंस इज मैंडेटरी. ठीक है जी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी वुड लाइक टू रोल आउट द एजेंडा नाउ. हम चाहेंगे कि इंस्ट्रक्टर्स आएं और आपको थोड़ा सा in no more than 5 minutes, Osama, because what is the timeline? Okay, so we have about 45 minutes. तो हम चाहेंगे कि हर इंस्ट्रक्टर आके 5 मिनट में अपने मॉड्यूल की एक ओवरव्यू दे दे. What are the key objectives? What is the deliverable? And how are they going to conduct the workshop? So we are going to start with Osama. Osama के साथ ताहा भी होंगे and another team member. But and they have a startup, so they are in software engineers and tech enthusiasts. And they are going to tell you how they are going to conduct the first module. So over to Osama and Taha. Thank you, Ji. अस्सलाम वालेकुम. एक second. Osama? Osama. ओके, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक हो गया. कुछ बच्चे जो हैं नींद में लग रहे हैं. किस किस को नींद आई हुई है? एक बार सारे खड़े हो जाएं. आप सारे बैठ जाएं एंड देन स्टैंड सिट. ओके. एक फ्रेंडली क्वेश्चन है. ये बताएं कि आज सुबह जब आप लोग उठ रहे थे, अपनी मर्जी से कौन उठा है इनोविस्टा आने के लिए, इस कोर्स और इस क्लास के लिए, और किस किस को उसके मामा और बाबा ने जगाया है और वो लेके आए हैं? ओके. ओके. आपको आते में कोई प्रॉब्लम हुई?
कोई ऐसी चीज आपने देखी हो कि जो प्रॉब्लम हो और उसे हमें सॉल्व करना हो? आपके जहन में कोई आइडिया हो? ओके, पहले ताहा अपना तारुफ कराएंगे और उसके बाद इससे आगे हम लोग चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहा है एंड मैं इनोविस्टा के साथ एज एन एआई डेवलपर काम कर रहा हूँ। एंड हमारा जो कोर्स है उसके अंदर वाइब कोडिंग कवर होगी एंड जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है बिल्ड चैटबॉट विद N8N। तो जो वाइब कोडिंग है उसके अंदर लाइक पहले क्या होता था प्रीवियसली कि फॉर एग्जांपल जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता था तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कोडिंग साइट की तरफ जाना पड़ता था। यानी कि पहले जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते थे उसमें हमें राउंड अबाउट 1 से 2 महीने आराम से लग जाते थे सिंपल लेवल के सॉफ्टवेयर के ऊपर भी। अब इस तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग राउंड अबाउट 1 से 2 घंटे में बना लेते हैं। और इस ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ एआई। अब ये हुआ है एआई की वजह से। अब मसला ये है फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनना मसला नहीं रहा। अब जो आप लोगों ने भी जिस चीज के ऊपर ध्यान देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई करनी है जो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना मसला नहीं है। जो बंदा अच्छी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा वो एट द एंड ऑफ द डे उसी की ऐप चलेगी और अर्निंग भी वही बंदा जनरेट करेगा। क्यों? पहले मैं और उसामा एक चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि एक बंदे ने ऐप बनाई थी। सिंपल ऐप क्या थी कि फॉर एग्जांपल जब दूसरी कंट्रीज में कंपनीज को फाइन होता है तो वो राउंड अबाउट $700 मिलियन, $800 मिलियन इस तरह होता है। तो उसका इस तरह होता है कि एक बंदे ने ऐप बनाई कि जैसे ही वो फाइन होगा तो यूजर को ऑटोमेटिकली पता चल जाया करेगा कि उस कंपनी को फाइन हुआ है एंड आपको रिफंड मिल रहा है उस चीज का। अब इसका आउटकम क्या था कि जो यूजर था उसकी एट द एंड ऑफ द डे उसके पास पैसा जा रहा था। तो उसने 1 से 2 महीने में उसकी ऐप जो थी मोनेटाइज भी हो गई और वो मंथली तकरीबन $10,000 अर्निंग करने लग गया था विदाउट एनी मार्केटिंग। तो इस तरह आप लोगों ने जाना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, देन उसकी ऐप बनानी है एंड देन उसको लाइव वगैरह करना है। ओके, हम लोग इसको अलाइन कर लेते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों में से कितने बच्चों ने गेम्स खेली हुई हैं आज से पहले? कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी कोई गेम ना खेली हो जिंदगी में? आप लोगों में से ऑनलाइन वालों में से कोई है? कमेंट्स नहीं आ रहे हैं? चले ठीक है, नो इशू। ऑनलाइन वालों में से कोई ऐसा बच्चा जिसने आज से पहले गेम ना खेली हो? मीन सब ने गेम्स खेली हुई हैं। आज से पहले आज से पहले किस किस ने सोचा था कि मैं भी जो ये गेम खेल रहा हूँ क्या मैं भी ये गेम बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? आप लोगों ने सोचा था कि हम बनाएं ये गेम्स? आपने क्या सोचा था? तो आपने कोई ट्राई किया और फिर गेम बनाई? चैनल बन गया? ओह ओके, हम लोग इसे डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले अपने ज़हन में हम आइडिया लाएंगे। आप अपने ज़हन में 1 सेकंड के अंदर आइडिया ले आए गेम का। अब इस गेम को हम लोग एआई के चैट जीपीटी के साथ रिफाइन करेंगे और उसको पॉलिश करेंगे और उसके बाद वाइब कोडिंग के थ्रू हम अपनी इस गेम को बना लेंगे, यूआई यूएक्स डिजाइन करेंगे और उसके बाद इसे पब्लिश कर देंगे। आप लोगों को समझ आ गई है कि क्या करेंगे हम लोग? ओके, कल आप लोगों ने ये करना है कि चैट जीपीटी और एक दो और सॉफ्टवेयर्स मैं बता दूंगा, अगर इनका कोई ग्रुप्स है उसमें शेयर कर देंगे, तो उनके ऊपर अपने अपने अकाउंट्स बना के लाने हैं। लास्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी आप लोगों में से कितने बच्चों ने यूज किया हुआ है? ओके, और स्कूल वर्क कौन कौन चैट जीपीटी से करते हैं? ओके, चले ये हम लोग के मॉड्यूल का थोड़ा सा इंट्रो था और उसामा सॉफ्टवेयर के नाम पे इंट्रोड्यूस करना है। ओके, मीन्स आफ्टर 2 डेज, जब 2 दिनों के बाद आप क्लास लेके फारिग होंगे तो आपके पास एक गेम होगी और वो गेम लाइव होगी और आप वो गेम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि ये गेम मैंने बनाई है और वो गेम आपकी इंटरनेट के ऊपर लाइव होगी और पब्लिश होगी। आप लास्ट टाइम वाले हो? ओके, नेक्स्ट आप नेक्स्ट कौन है? Next slide. चैट N8N
तो देन हम लोग के पास आ रहा है चैटबॉट डेवलपमेंट। प्रीवियसली क्या होता था कि जब आपने चैटबॉट बनाना होता था तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होता था। अब फॉर एग्जांपल हम लोग चैटबॉट बनाएंगे, उसके अंदर ये होगा किसी भी कस्टमाइजेबल चैटबॉट। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक चैटबॉट बनाना है किसी स्कूल के लिए। कौन से स्कूल से हैं बेटा? ओके, जैसे अब ये बेंचमार्क स्कूल के हैं, तो ये फॉर एग्जांपल क्या चीज चैटबॉट बनाएंगे, ये फॉर एग्जांपल अपने स्कूल से रिलेटेड चैटबॉट बना लेंगे। बिकॉज एआई के आने की वजह से चैटबॉट्स की डिमांड भी बढ़ गई है, तो हम लोग इसके अंदर चैटबॉट डेवलपमेंट सीखेंगे विद नो कोडिंग। कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होगी इसके अंदर, और एआई के थ्रू ही होगा। आप स्टार्ट लोग ये बता सकते हैं चैटबॉट क्या होते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं चैटबॉट किसे कहते हैं? चैटबॉट किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी जगह कोई रोबोट आ जाए, वो आपसे बात करे और वही रोबोट किसी वेबसाइट में ऑनलाइन हो तो क्या होगा? सर चैटबॉट से कहते हैं जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ किसी चीज से, या फिर कोई दुनिया में जितनी भी चीजें होती है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो उसके लिए अगर हम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी मशीन कंप्यूटर वगैरह का अगर उससे बात करें, उससे कहते हैं। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज जिस तरह हम लोग ह्यूमन आपस में बात करते हैं, उस तरह एक हमारे पास रोबोट होता है जो हमारी वेबसाइट या हमारी चीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर को। यानी इसी तरह सिंपल एग्जांपल जो चैट जीपीटी है, आप अपना छोटा सा चैट जीपीटी बना सकते हैं जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देगा इन सिंपल। एंड उसको फिर हम लोग डिप्लॉय उसको लाइव करेंगे, और उसको हम एट द एंड उसको फिर वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट भी करें, यानी कि प्रॉपर एंड टू एंड उसका सॉल्यूशन डिप्लॉय होगा लाइक डिलीवरेबल। नेक्स्ट मॉड्यूल किन के? हैरी पॉटर। मैम आप अजय फातमा। मैम ये दीजिए। Ji, so I think I've told you a lot about the Harry Potter novella writing. I will take this opportunity. अगर हमारे CEO श्याम सरवर बुरा ना मनाए, he's over here for some other errand. लेकिन अगर because he is here, I would like to invite him because मैं चाहूंगी बच्चों कि आप हमारे CEO श्याम सरवर से मिलें और थोड़ी सी अगर CEO आप टाइम निकाल के if you can motivate the children. CEO श्याम सरवर, thank you जी. Big round of applause. You're going live, so आपको ये अच्छा मैं लाइव हूँ किस पे? YouTube पे. Thank you जी. क्या सीखने आए हो? We'll have a candid conversation 5 minutes. क्या सीखने आए हैं आप लोग? गेमिंग खेलनी है कि बनानी है? उससे क्या होगा? फोटोशॉप सीख नहीं, अच्छा कि गेमिंग बना ली तो क्या होगा? एक तो अचीवमेंट है ना कि मैंने गेम बना ली, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर गेम बन गई फिर क्या होगा? पॉकेट मनी। और क्या सीखना है? आपने फोटोशॉप बोल दिया, बताओ बताओ। एआई सीखना है। और एआई में क्या सीखना है? और ये आपको बेटा किसने बताया इस N8N और चैटबॉट के बारे में? प्रिलिमिनरी कोर्स किया हुआ है। हाउ ओल्ड आर यू? माशाल्लाह। जी जनाब, आप लोगों में से कौन क्या करना चाहता है? आइडिया टू लॉन्च स्टार्टअप। स्टार्टअप लॉन्च करना है? किस चीज का? कुछ भी। मार्केटिंग का, डाटा साइंस का, ताकि सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाए। Who's the youngest in the? सबसे छोटा कौन होगा? मोस्ट प्रॉब्ली आप शायद। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी एज क्या है बेटा? 8 years। और आपकी क्या एज है? हाउ ओल्ड आर यू? कौन है? क्या एज है? नहीं, 8 वाला तो मैंने पकड़ लिया। 8 वाली। अच्छा, और कौन लेके आया है? मामा पापा कहाँ हैं? छोड़ के चले गए? फिर क्या करोगी इधर? गेम खेलोगी? हाँ, क्या करोगे? क्या करने आए हो? कुछ तो करने आए होगे ना?
अच्छा मुझे बताओ कोई एक, लेट्स से चलो ये जिन्होंने बता दिया है, मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, और तमाम जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको वालेकुम सलाम, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मोटिव होना चाहिए ना। देखो समर वेकेशंस हैं, ए देयर आर टू ऑप्शंस, ए बस 3 महीने गुजार लो खेल कूद के, बी यूटिलाइज इट, उसका एडवांटेज लिया जाए बेटा, इट्स नॉट बोरिंग which you typically think education is, and everybody thinks the same by the way, but this is innovative. अब इसमें आप क्या ऐसा सीखोगे जो कल के दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो, दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो इन क्लासेस के साथ साथ जैसे किसी ने बोला स्टार्टअप, किसी ने बोला फोटोशॉप, किसी ने कहा मैं गेम, किसी ने कहा मैं N8N, बच्चों ने, सो इनको भी तो किसी ने अवेयरनेस दी है ना, ये भी तो कहीं से सीख के आए होंगे, पेरेंट्स से सीखा होगा, बड़े बहन भाइयों से सीखा होगा, कजन से सीखा होगा, चाचू मामा मामू ताया किसी से सीखा होगा, या इंटरनेट से सीखा होगा। दिस इज व्हाट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू फिगर आउट, टू नो, जानो कि क्या करना चाहते हो, क्या ऐसी चीज है जो इधर आके अगर आप सीखो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो। तो कल के दिन जब मैम पूछें कि किसने क्या सीखना है, तो एवरीबॉडी शुड हैव एन आंसर। ठीक होगी ये बात? ठीक है, से यस, बस ये थम्स अप, ये गुड बॉय। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, CEO. बहुत शुक्रिया। And those who are watching online, can we take a look at the comments for a second before I leave? अच्छा जी, प्रिंसिपल FG स्कूल, थोड़ा स्क्रॉल अप करें। वेरी नाइस जी, खारियां, गुड जॉब जी। You guys have, bro was forced to say yes. That's what I do. That's what I do. Thank you very much. Okay जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू CEO, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों, do you know who's I'm so very sorry. Do you know who spoke to you? Who was he? Hisham Server. And what is he known for? CEO of Innovista, and what else? So he is the guru of freelancing. And और बताएं, आसान तरीका बताते हैं। बताएं। How many of our, how many were on YouTube? सारे हो गए ना, raise your hands. You watch YouTube for kids, right? सबको पता है। पेरेंटल कंट्रोल के साथ ऐसे ही होता होगा ना, सारे YouTube देखते होंगे। अच्छा, मिस्टर बीस किसने देखा? ये अल्फा जो है ना, so मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, who has got golden button and अरे वाह, subscribers around 1.5. वाह, अब इससे ज्यादा कोई क्या फ्लेक्स करे। So point is, बच्चों, you were actually being told or being addressed to by the guru, ठीक है? तो उन्होंने आपको कुछ एडवाइस दी है that learn some, modules and learn to earn. उन्होंने कुछ थोड़ी सी आपको बातें बताई कि जो आप स्किल सीखेंगे उससे आप in times to come. So learn by the guru himself. I'm so happy that he took out some time and shared. और हम उनको चाहेंगे कि वो आपको वक्तन फवक्तन, because he really loves children a lot. So he's very busy. हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको आके वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है? So anyway, without further delay, हम आपको थोड़ा सा we would go back to our slide deck. तो हैरी पॉटर इंस्पायर्ड नोवेला जो है उसमें हम आपको, I have told you, हम आपको बहुत एक्सपेडाइटेड पेस में
about 5 days, we are going to work with you and we are going to make you write a very original but inspired by Harry Potter novella. Novella क्या होता है? Does anybody know what is a novella? Novel तो पता है. What is a novella? जी. It's a small extension of a novel. What do you mean by? It's a smaller novel. Yeah, you could say that. Yes. Yes. So will you keep writing a Harry Potter inspired novella? Why not, girl? It's going to be great fun. Are you a writer? किसी ने अगर एक भी किताब पढ़ी है हैरी पॉटर की, वैसे तो हमने ये रखा था कि सीरीज पढ़ी हुई हो, लेकिन अगर आपने एक भी किताब पढ़ी है तो हम आपको चाहेंगे कि आप आके लिखें. So it's going to be great fun. बहुत मजा आएगा. But this workshop is not for everybody. जिनको पढ़ने का शौक है, जिनको लिखने का शौक है, जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ी हुई है, this is for them. And this is always a very, very small workshop because हम आपके साथ बहुत closely काम करते हैं. And we make sure कि आपका एक proper novel निकले. This time it's going to be a story or a novella. So it's going to be very interesting. And Fatma, who is a master's in an undergrad in literature. Yes, Fatma ने मुझे correct किया. So she is going to be working with me. And Manur, who is not here, she is also going to be working. Unfortunately, जो मेरे mentor हैं, Tariq Tahir Saab, who actually is the curator of this workshop, he will not be here this time. As we speak, he's undergoing a spinal surgery. उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. But he created this workshop, but he's not going to be here. But anyway, we are going to try to, do justice to this workshop. और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा. Next slide deck. So idea to launch, build with AI. So मैंने इसके बारे में भी आपको बताया कि हम आपके साथ पूरी startup kit बनवा. So I think explained it very in detail. Orientation and AI, when they are joined together, giving you that, orientation, those guidelines, and at the end, the minimal, deliverable would be a pitch deck. कि आपके पास आइडिया हो और आप एक पिच डेक बनाएं और उसको ऑगमेंट करने के लिए आप जितनी भी चीजें ऐड करेंगे, आपके पास ब्रोशर हो सकता है अपने प्रोडक्ट का, आपके लिए मार्केटिंग कोलैटरल हो सकता है, पोस्टर, पोस्ट हो सकती हैं, आपके पास वेबसाइट्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल्स होने जरूरी हैं, उसके लिए आपके लिए कोई गैप एनालिसिस जरूरी है. बट the main thing is idea. What is the idea? Like I said, मैंने आपको थोड़े से ideas in the beginning of the workshop बताए थे. So think of a novel idea, you see, and then we are going to work together with you और आपको pitch करें. So you stand before us अपने showcase पे and you're going to say, here is my product, here is the service, this is my pitch. Okay जी? Next. Frame the independence CapCut. I would now invite Abdullah, who is the instructor and curator of this workshop, to tell us more about this. Thank you, Ji. अस्सलाम वालेकुम. इस कोर्स के अंदर जो हमने कैपकट का काम करेंगे, इसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि कैपकट के हवाले से अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग नहीं होगी इस कोर्स के अंदर. इसके अंदर हम क्रिएटिव साइड अनलॉक करेंगे अपनी, और इसके अलावा हम स्टोरी टेलिंग वाली साइड भी अपनी अनलॉक करेंगे. तो आप जब इन चीज़ों की तरफ आएंगे और कैपकट को सीखने की तरफ आप जब काम शुरू करेंगे इसके ऊपर, तो आपको बहुत कुछ अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट नजर आएंगी और आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो भी अनलॉक होगी. तो बस आप लोगों ने जब ये कैपकट की क्लास लेनी है और उस टाइम आना है, तो साथ में अपने साथ कोशिश ये करें लैपटॉप्स आपने लाजमी अपने साथ लेकर आने हो. और इसके अलावा जब हम कैपकट का कोर्स करेंगे, हमारी ये वर्कशॉप आई थिंक 3 डेज की होगी, और 3 डेज के अंदर हम शॉर्ट्स लेने से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन तक और कंप्लीट एडिटिंग कंप्लीट करने तक रील एडिट करेंगे. जी, आपका क्या क्वेश्चन है? आईपैड के ऊपर भी काम हो सकता है, मोबाइल फोन डिवाइसेस पे भी काम हो सकता है, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन डिवाइसेस के ऊपर रहेंगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी आपके पास कैपकट की,
क्योंकि मोबाइल ऐप्स जो होती हैं वो डेवलपमेंट साइड से थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती हैं बमुकाबला इसके कि जो हमारे पास के अंदर हम थोड़ा सा हमारे पास एडवांसमेंट होती है टूल्स के ऊपर, हम थोड़ा सा लेवरेज होता है हमारे पास। तो जब हमारे पास ये 3 दिन की क्लासेस होंगी तो आप लोगों ने बस कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ आना है, क्योंकि काम क्रिएटिव है और मजा आएगा आप लोगों को ये काम करने में। बाकी बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट आ जाए। I can hear you. Assalamualaikum. My name is Vaina Mujgan and I'll be telling you about 3D modeling. अच्छा सर की तरह मैं भी एक सवाल करना चाहूँगी। किसी ने कभी सोचा जब हम 3D एनिमेटेड मूवीज देखते हैं या कोई भी वीडियोस देखते हैं तो कभी सोचा कि ये कैसे बनती होंगी या ये कैसे प्रोसेस करती हैं? एनिमेटेड मूवीज कोई देखता है? नाइस, ओके गुड। ठीक है, तो हमारा मेन जो फोकस होगा वो है 3D हेडफोन्स इन ब्लेंडर। इसके लिए सबसे पहले तो हमें लैपटॉप हमारा होना मस्ट है। लैपटॉप और हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो ब्लेंडर होगा, वो किसी टैब या फोन में नहीं चलेगा, उसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। हम अच्छा स्टार्ट करेंगे विद एनी रेफरेंस इमेज ऑफ हेडफोन्स या कोई भी स्केचिंग, लेकिन बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का काम है इट्स थोड़ा सा टेक्निकल और लेंथी प्रोसेस। तो मैं चाहूंगी कि हम ऑलरेडी आप जब फर्स्ट डे आए तो अपने साथ कोई हेडफोन्स की रेफरेंस पिक्चर या अपना स्केच बना के लाएं, जो भी हेडफोन्स आप बनाना चाहते हैं। वी विल स्टार्ट विद अ बेसिक शेप कि उसको हम कैसे मोल्ड करेंगे, कैसे स्कल्प करेंगे, कैसे उसके वर्टिसेस एंड एजेस मूव करके, जैसे क्ले को हम मोल्ड करके एक चीज बनाते हैं, ऐसे 3D में भी हम एक शेप से मोल्ड करके हम 3D हेडफोन्स बनाएंगे। उसके अलावा हम उसमें देखेंगे कि उसको शेप कैसे करते हैं, मॉडल कैसे करते हैं, एनिमेशन की जो बेसिक्स होती हैं कि कैमरा एंगल्स कैसे मूव करते हैं, उसमें लाइटिंग कैसे आएगी, टेक्सचरिंग कैसे होगी, वो सब हम डे बाय डे साथ प्रोसेस करेंगे उसको। फाइनल हमारा जो आउटपुट होगा वो रेंडरिंग के थ्रू होगा कि कैसे एक फाइनल वीडियो बनेगी, हमारा हेडफोन्स कैसे मूव करें, कैसे उसकी फाइनल जो लुक है, उसके कलर्स हैं, उसकी लाइटिंग है, वो कैसे शो हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यू कैन फ्रीली आस्क। ठीक है, थैंक यू सो मच। Now I would like to invite a very, very talented and charming Fatima, who's a graduate of fashion design. Yes. So she's going to explain her module, design your own t-shirt using Canva. So this is going to be a fantastic module. Thank you, Fatima. Assalamualaikum everyone, am I audible? Okay, हम में से पिछले साल हम सब ने वैसे की थी, कौन कौन था? मुझे कुछ आप थे, आप थी, आप लोगों ने बनाई इसके बाद टी शर्ट्स? अच्छा, what we're gonna do is we're gonna start with Canva. जिसको Canva आता है we can work with that. बट अगर किसी ने फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे किसी और सॉफ्टवेयर पे बनानी है तो हम उस पे भी बना लेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप सबकी जो शर्ट्स डिजाइन होंगी आप लोग मुझे अपनी प्रिंट फाइल्स देंगे, मैं उनको प्रिंट करवा के लाऊंगी, आप लोग उनको पहन के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो या उसका आइडिया बेसिकली तो वो पहनेंगे शर्ट्स, आप एक खुद अपना ब्रांड बन जाएंगे, लोग वो देखेंगे, उनको अगर आपकी शर्ट पसंद आ जाए कि वाह क्या शर्ट है, तो आप उनको बनवा के दे सकते हैं। How you sell your design? Yeah, you can basically start a startup. मैं आपको वेंडर आप उसको प्रिंट कहाँ से करवाएं, आप उसको सेल कहाँ पे करें, तो it's gonna be fun. ठीक है, thank you. Thank you. किसी उतारूं? My bad. Next slide. So we are coming to the last module of our Tech Venture series of workshop. But like they say, it is the best things come at the very end. Tisham, please explain your workshop. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ओके, तो यूआई यूएक्स के बारे में आप सबका कुछ नॉलेज है इससे पहले? बिल्कुल भी नहीं पता? ओके, इस स्क्रीन में जितना कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये इसका यूआई है। बिल्कुल सिंपलेस्ट आसान अल्फाज में। बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको शो हो रहा होगा, एक टाइमर चल रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं। इनकी प्लेसमेंट जिस तरह से की गई है और इसके बैकएंड पे एक जिस तरह से फ्लो चल रहा है जो इसको हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने आप तक ये चीज़ कैसे डिस्प्ले की है, ये बैकएंड पे इसका यूज़र एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ यहाँ पे ऐसे शो हो रही है। तो ये छोटा-सा बिल्कुल एक आसान-सा आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है यूआई यूएक्स का और मेरा जो इसमें ये वाली जो वर्कशॉप होगी, इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 चीज़ें होंगी। सबसे पहले वी विल बी फोकसिंग ओके, आई एम ऑडिबल एट द एंड? ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं? व्हाई? ठीक है? अब हम डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन यूज़र नीड्स। हमारे पास यूज़र नीड्स कैसे आएँगी? हम उनके ऊपर फ़ोकस करके आगे जो अपना डिज़ाइन है वो कैसे बनाएँगे? यूज़र की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास आएँगी फर्स्ट मॉड्यूल में जो कि द व्हाई वाला पार्ट है। उसके बाद हमारे पास है हाउ। हमने ये चीज़ करनी है लेकिन किस टूल की हेल्प से करनी है? तो यूआई यूएक्स के लिए जो टूल यूज़ हो रहा है आजकल दैट इज़ फिग्मा, जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है, मोस्टली जो ट्रेंडिंग में है इट इज़ फिग्मा। सो वी विल बी वर्किंग ऑन फिग्मा। तो हम इसमें फंडामेंटल्स की बात करेंगे। आई यू नो शो यू द बेसिक्स एंड एडवांस्ड टेक्निक्स कि आप कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं फिग्मा के अंदर। उसके बाद हमने देखना है कि हम जो बना रहे हैं उसकी लुक एंड फील कैसी है, विजुअली वो चीज़ अपीलिंग है या नहीं है। इसको हम देखेंगे थर्ड मॉड्यूल के अंदर और उसके बाद हमने ये देखना है क्योंकि जब एक आपने चीज़ को डिज़ाइन कर लिया, आपने उसी स्किल के अंदर एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज़ जब से एआई की बात आई है, तो हम अपने वर्कफ़्लोज़ के अंदर एआई को यूज़ करना चाहते हैं, अपने काम आपको थोड़ा-सा एफ़िशिएंटली करना चाहते हैं, ठीक है? उसके लिए हम इसके यानी कि एआई पावर्ड जो यूआई यूएक्स का वर्कफ़्लो है, उसको देखेंगे और जो इसमें डिलिवरेबल्स होंगे, डिलिवरेबल्स हमारे पास वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज होगा, मोबाइल के साइन अप फ्लोज़ होंगे। आप इसमें देख सकेंगे कि कैसे आप एक वेबसाइट को गुड वेबसाइट, बैड वेबसाइट जिस तरह की मैम राबिया ने आपको बताया, तो ये चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। तो बिल्कुल एंड पर हम एक जो भी हमारी वर्कशॉप होगी उसके एंड में हम शोकेस रखेंगे और फिर देखेंगे कि आपने कितनी अच्छी मोबाइल ऐप बनाई है, उसके फ्लोज़ बनाए हैं या कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है। So that's all from my side. Any questions? Sure. No, it's not only about placements, it's my design. Yes. Why is it the longest module? Because we got multiple deliverables. Working days, probably 3 to 4. Any other questions? जो आप सिखाएंगे क्या के थ्रू हम ई कॉमर्स स्टोर या उस तरह की वेबसाइट भी बना सकेंगे अपना स्टोर या इस तरह कुछ? जी, आप उसका डिजाइन बना सकेंगे। जी। Any other questions? Thank you so much. Okay. जी। ये आप हमें ज़ीरो से गाइड करेंगे क्या? जी, जी, बिल्कुल स्क्रैच से। ज़ीरो से? बिल्कुल ज़ीरो से। आपने बस लैपटॉप लेकर आना है और जी। No, it will not be involving any coding at all. So if you are not interested in coding, आप में से किसी का कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बहुत मजे नहीं, इसमें यूएक्स का जो मॉड्यूल है, इसके अंदर कोडिंग नहीं होगी। user experience. What entails a good website from the design perspective, from the user experience perspective. तो वेबसाइट बनाना तो अब बहुत आसान हो गया है. Just a few prompts and voila, you have the website. But is it a good website from the user
interface point of view, from the user experience point of view. So he is the expert on that. इनकी डिग्री है पूरी उस पे. So वो आपको बताएंगे what is good design, what is bad design, what is good interface, what is bad interface, क्या seamless है, क्या नहीं है, वो आपको design perspective से बता रहे हैं. क्योंकि अब वेबसाइट बनाना कोई कमाल नहीं, बट एक अच्छी वेबसाइट बनाना वाकई अभी तक कमाल, right? So he is going to give you that design perspective, right? That's all from my side. मैम एंड पे किसी ने हैंड रेज किया. Any other question? प्लीज. उसकी कलर स्कीम होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट के डिफरेंट कलर स्कीम्स और कलर के शेड्स होते हैं. तो आप वो शेड्स बताएंगे कि किस वेबसाइट के लिए कौन सा शेड किस कलर का सूट करता है और विजुअली अपीलिंग बनाएगा उस वेबसाइट के साथ. एक्चुअली जो कलर थ्योरी होती है, कलर थ्योरी में सारी चीजें आती हैं और हर कलर कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रहा होता है. अब हमारा प्रोडक्ट जिस तरह का होता है और जिस तरह की उसकी वेबसाइट होती है तो हमने कलरिंग जो रखनी होती है वो उसी हिसाब से रखनी होती है. तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टाइप. उस टाइप के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा कलर क्या चीज सिंबलाइज कर रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना कलर पैलेट बनाते हैं और फिर अपनी वेबसाइट बनाते हैं. ठीक है, समझ आ गया आपको? थैंक यू. Let's take your question. Hand to that. Yeah. I don't have a question. Okay. Raise your hand, right? Yeah. Question? Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. You're welcome, ma'am. Sure. So, thank you, instructors. बहुत बहुत शुक्रिया आपका coming over and giving an overview of your modules. आप अपने modules को on करते हैं. Thank you so much. And the way you can explain and give an in-depth analysis, obviously we can't. So thank you so much for being part of the orientation session. बच्चों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. Before we culminate this session, I just want to say a few things. कि आपके लिए जो ऑन प्रेमिसेस आ रहे हैं आपके लिए सारे मॉड्यूल्स ओपन, ठीक है. सो यू कैन पिक एंड चूज विच एवर मॉड्यूल यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एंड विच एवर मॉड्यूल यू वांट टू लर्न. अगेन reiterating, I'll take your question in a bit. Reiterating, don't burn yourself out and be and register in all the modules. ठीक है. तो हम चाहेंगे कि आप माइंडफुली सिलेक्ट करें which module sits with you, which is resonating, which is interesting for you, because हम चाहेंगे कि जो चीज आपको अच्छी लगी है आज उसके साथ फिर बहुत चाहत से बहुत दिल के साथ आप डिलीवरेबल बनाएं, right? And we also want you to enjoy your summer vacations. So not all modules but a couple of them, but then be committed to working tirelessly and maybe even when you go आप घर पे भी थोड़ा सा काम करें, वीकेंड्स पे भी काम करें ताकि आपके पास एक सॉलिड डिलीवरेबल हो. अच्छा, वर्कशॉप का स्ट्रक्चर ये है कि आपके जो भी वर्कशॉप के डेज हैं उसके आखिरी दिन पे शोकेस होगा. सो वी वुड एक्सपेक्ट कि जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं जी, अबाउट 4, और कुछ हमारे ऑन प्रेमिसेस ओनली हैं. तो अगर हम पहली स्लाइड पे चले जाएंगे, आई विल बी एबल टू टेल यू दैट व्हिच मॉड्यूल्स आर अवेलेबल फॉर यू ऑनलाइन. तो अब्दुल्ला का पहला आप हमें पहली स्लाइड दिखा दें. And I would like Fatima to help me out with this. Fatima, हमारे पास गेमिंग ऐप विद वाइब कोडिंग हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल है, राइट? सो बिल्ड अ चैटबॉट विद n8n, ये भी हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल है. सो मॉड्यूल 1 and 2. हैरी पॉटर नोवेला राइटिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स बिकॉज हम बहुत क्लोजली काम करते हैं विद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन प्रेमिसेस. तो ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं होगा. आइडिया टू लॉन्च स्टार्टअप्स बिल्ड विद AI, ये अगेन ऐसा मॉड्यूल है जिसमें हम बहुत क्लोजली काम करते हैं विद ऑन प्रेमिसेस
पार्टिसिपेंट्स, तो ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। फ्रेम इंडिपेंडेंस यूजिंग कैपकट, ये अवेलेबल है फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। 3D हेडफोन्स इन ब्लेंडर, ये भी अवेलेबल नहीं है फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। Design your own t-shirt using Canva, this is available for online participants. And last, UX Explorers design a website, ये available है for online participants. तो online participants इसको मद्देनजर रख के फिर आप हमें join कीजिएगा, and we will be going live through our YouTube like we did today. तो 10:30 to 12:30 आप अपने selected modules के days के मुताबिक आप हमें join कर लीजिएगा। हम आपके WhatsApp ग्रुप पे अपना schedule online modules का share भी कर लेंगे आपसे आज के दिन। So there are a couple of students who have said कि हम कुछ modules on premises join करेंगे और कुछ modules हम online join करेंगे। So I would recommend कि अगर आपके पास option है to come on premises, please come on premises, because these workshops were ideally designed to work in person in close collaboration with the instructors, with the interns. तो जितना आप on premises मेरे ख्याल में अगर आप आ सकते हैं तो it would be beneficial. Having said that, हम बहुत से ज़्यादा कोशिश करके अपने online participants को engage करेंगे, ठीक है जी? So that is the point. और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी starting with our first module, which is design your gaming app, ठीक है? Using white coding. So see you inshallah tomorrow at 12:20. Seated here. Okay. Any questions as we wind up this? जी, आप आगे आ जाओ। We can- जो ऑन प्रेमिसेस का आपने बोला उसमें हमें कोई भी मॉड्यूल्स के लिए आ सकते हैं, हमारे लिए सारे मॉड्यूल्स ओपन है जी। How? What have you registered for? Because our registrations are closed. लेकिन आप किसके लिए आपने register किया? मैंने रजिस्टर कर लिया था 4 to 5 के लिए। ये मैंने सारों के लिए रजिस्टर किया था इन केस, बट मैंने 4 नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है। It's all right. So you can. आपको confirmation email नहीं आई है? ओरिएंटेशन के लिए आई है। Right. ठीक है. So we will. So we have a little bit of a limitations from our email server. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको emails कर दें with regards to workshops. जिन जिन workshops के लिए आप register कर रहे हैं उसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको email कर दें. But anyway, whoever is sitting on premises and has registered for vibe coding, I would recommend you कि आप आ जाएं और front desk पे अपनी attendance mark करवा लें. ठीक है जी? तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आज ईमेल कर दें, लेकिन हमारी थोड़ी सी लिमिटेशन है ईमेल सर्वर के साथ, तो वो बल्क में कर नहीं सक रहे हम ईमेल। जी आप आ जाएं। I have a question that can we come each day for every module. So tell me, what is your name? Mohammed Ahmed. Are you really interested in all the modules? Can we leave the modules that we're not interested in and we will not come? Yes, absolutely. That is the idea. तो आपने अगर registration form देखा हो तो हमने आपसे ये registration form में कहा था कि जो आपको module interest कर रहा है, जो आपके साथ resonate कर रहा है, आप उसको tick box को आपने check करना था. You haven't registered. Yeah, so we closed the form yesterday. So you were a little tardy in responding to the form. कल हमने close किया है form. But it is okay. You are here and I like people who are proactive. So you are here.
You are very much part of the Tech Venture series of workshops. आप कल आ जाओ, ठीक है? Are you interested in tomorrow's workshop? It is going to be a whole lot of fun. ठीक है? अच्छा, another thing कि जो chatbot development कर रहे हैं उनको मैं कहूंगी कि आप game development भी करें. ठीक है जी? Game development और chatbot development थोड़ी आपस में linked हैं. So I think that game development will sort of be a prerequisite for chatbot development. तो आप इन दोनों modules को जरूर करें. ठीक है जी? जी बेटा आपका एक क्वेश्चन था which I had not taken at that time. आ जाए. हमारा टाइम खत्म हो रहा है क्या? You can talk. Camera. Oh, sorry. You will be audible. Acha, I had a question about like, you know, this. Oh, sorry. Acha, I had a question about like the modules. I didn't know I accidentally like signed up for all the modules, which is like very wrong, but I wanted to change them and you dropped some of them because as you said, you should only participate in the modules that interest you. So is that possible now or like? Absolutely. It is absolutely possible. ठीक है? तो आप just turn up for the modules that you're interested in. So मुझे बताओगे कि which are the modules that you have decided after the orientation? I really like the Anytime one, the idea to launch one, the game development one, and there were some other ones. मुझे सारे recall नहीं हो रहे अभी. चलो बस ठीक है. Whichever is resonating, come for those. And whichever is not sitting with you, it's all right. Okay? Thank you, ma'am. Yeah. You told us there's also a module for like working with CapCut. So I wanted to share that I also make reels with CapCut. I have a public account on Instagram. Excellent, excellent. Public account on Instagram. अब्दुल्ला सुन रहे हैं आपके participants जो हैं वो already certain proficiency level पे हैं. So I wanted to ask, what's the date for this module? हम आपके साथ schedule share हुआ है post में. अगर आप हमारे socials check करें उस पे dates भी mentioned है. But this is going to be somewhere in August, I believe, or late July. But anyway, हम आपके साथ post, आप हमारे WhatsApp groups पे हैं? Yes. हम आपके साथ उधर share करें. All right. Thank you. Thank you very much. So I would also urge you, जो on-site participants हैं, हमारा एक WhatsApp group है on-site participants का, आप उस पे आ जाएं. और जो हमारे online participants हैं, उनके लिए एक अलग हमने WhatsApp group बनाया है. Online participants को भी मैं urge करूंगी कि आप लोग हमारे WhatsApp groups पे आ जाएं, ताकि हमारे लिए easy हो to share whatever we need to share with you. Hanji, anybody else who needs to ask us any question? And who's this girl who's feeling very sleepy today? It's okay. Just try to get your 7 to 8 hours of sleep tomorrow. Yeah. Sleep is important because you want to be very, fresh and perky tomorrow for the game development. Usama is very, very rigorous and he wants you to come up with good ideas. Okay? Good on, girl. Or? जी आप कर लें जी. सबसे पहले तो आप टाइमिंग बता दें कल की कि किस वक्त आना है. यही टाइम 10:30 to 12:30 all the workshops. ओके. और क्या ये वेकेशन के बाद भी शुरू हो सकती है? हॉलीडेज जब खत्म हो जाएं तो? मुझे आपकी हॉलीडेज का स्केड्यूल नहीं पता, लेकिन आपकी जो हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट है उस पे स्केड्यूल सारी डेट्स और लिखे हैं. आज हमने आपसे स्लाइड्स भी शेयर की थी, उसमें भी डेट्स हैं. ये स्लाइड डेक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे. आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं? जी ठीक है. मेरा अब लास्ट सवाल ये है कि इसमें जितनी भी फील्ड हैं उन्हें सबको जीरो से गाइड करते हैं. अगर कोई बंदा फुल जीरो है जिसको इस चीज का मतलब ही नहीं पता तो जी जीरो से गाइड होगा. How to join your WhatsApp group? आप कहाँ से आप आ रहे हैं? I8 से. Go to which school? OPF. So Murtaza, I would request you कि आप इन दोनों को हमारे WhatsApp ग्रुप्स पे ऐड करा लें. फातिमा से आप लिज ऑन कर लीजिएगा वो WhatsApp
Ma'am, my answer's question is how to make by the workshop by finding a laptop then put system key. You're sitting at the premises ना मैं आपके सारे सवाल करूँ ठीक है ना you're sitting here आपको मैं तो इधर ही आप बैठी हैं just come over tomorrow okay any other question any other thing that you want to share किसी की कोई feedback before we culminate the session जी आपका चौथा सवाल मेरा चौथा सवाल ये है मैं वैसे इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ नॉवल लिखने में लेकिन मेरा ये सवाल है कि नॉवल से हट के कोई शॉर्ट फिल्म पे काम करना या वो लिखना सही है जैसे कोई मार्वल पर और बेसिकली जो नॉवल राइटिंग की वर्कशॉप है उसकी एक खास थीम है वो हैरी पॉटर इंस्पायर्ड नोवेला हम लिख पाएंगे सो अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं आपने हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ी हुई है ओनली देन कैन यू बी अ पार्टिसिपेंट बल्कि हम जिन लोगों ने उस वर्कशॉप के लिए अप्लाई किया उसके लिए हम एक फर्दर क्वेश्चनर भी भेजेंगे वी वांट टू डिसर्न वेदर यू एक्चुअली हैव रेड हैरी पॉटर बिकॉज यू गोइंग टू स्ट्रगल विद द वर्कशॉप अगर आपने नहीं पढ़ी अगर आप जो मूवी की बात कर रहे हैं सो यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी एंड दोज मूवी मेकिंग आइडियाज इन द इंडिपेंडेंस डे कैपकट रील दैट यू आर गोइंग टू मेक विद अब्दुल्ला ठीक है तो अगर आपको आपके अंदर फिल्म मेकिंग का शौक है और आपकी क्रिएटिविटी है तो आई वुड से चैनलाइज इट फॉर द इंडिपेंडेंस डे थीम रील राइट तो आप उसमें बहुत अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं बट फॉर द नॉवल राइटिंग आई वुड से ठीक है थैंक यू सो व्हाट्सएप ग्रुप का अगर ऑनलाइन का अगर आप इधर ऐड कर दें हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में व्हाट्सएप ग्रुप ओनली ऑनलाइन का इधर से डालिएगा ठीक है जी सो वी आर गोइंग टू शेयर द लिंक फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप इन द कमेंट्स लेकिन हम अपना ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप का आपके साथ लिंक यहाँ शेयर करेंगे जी I'm so glad to know somebody said it's my favorite, so I'm thinking कि हैरी पॉटर की सीरीज के बारे में कहा जा रहा है जी so any other question so we call it a day I hope you enjoyed the series of workshops इसको हम कहते हैं टेक वेंचर सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स की ओरिएंटेशन जी लास्ट क्वेश्चन जी so आइडियली वी वुड हैव लाइक्ड कि आपने सारी सीरीज पढ़ी हो बट लेकिन अगर आपने एक या दो किताबें भी हैरी पॉटर की पढ़ी हैं तो वी वुड अकोमोडेट यू आपको कम से कम हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स का पता है उसकी सेटिंग पता है उसके प्लॉट पता है सो गिव इट अ ट्राई व्हाई नॉट ठीक है जी जरूर आए आप और आपको लिखने का शौक है तो मेरे ख्याल में यू हैव द वीकेंड पे पढ़ लें What's your name, beta? Read a few, at least one more book over the weekend. You can do it. Ji. Any other question? So the next 2 days will be for game development. Fridays will be off for all workshops. आप Fridays को हम आपको off दे रहे हैं. स्केड्यूल आपका हमारा शेयर हुआ हुआ है सोशल मीडिया की पोस्ट में हमने स्केड्यूल शेयर किया हुआ है लेकिन हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम आपसे स्केड्यूल शेयर कर लेंगे मुर्तजा आपने याद रखना है हम ऑनलाइन और ऑन साइट जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हम उनमें स्केड्यूल शेयर करेंगे बट यू शुड नो एज अ रूल ऑफ थंब नो क्लास ऑन फ्राइडे वी वांट यू टू एंजॉय योर वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे सो द नेक्स्ट 2 days विल बी गेमिंग ऐप डेवलपमेंट मंडे शोकेस तो 2 दिन आप उसामा के साथ रिगरसली बैठ के गेम अपनी डेवलप करेंगे गेमिंग ऐप या एनी अदर ऐप राइट और मंडे को और ओवर द वीकेंड भी आप उस पे काम करके मंडे को आप शोकेस करेंगे उसको राइट और उसके बाद आप N10 पे मूव ऑन करेंगे सो एंड आई वुड वांट कि आप लोग गिव अप नहीं करें सो जस्ट बिकॉज आई एम लेइंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इट बीइंग अ डिलीवरेबल इसको बिल्कुल स्कूल की इन्वायरमेंट नहीं समझिएगा जस्ट कीप ऑन स्ट्राइविंग इवन इफ योर डिलीवरेबल इज देयर 50-60%
हम आपके साथ कोशिश करके उसको आगे लेके जाएंगे, but show up every day. You will learn. And don't just take a day off because मेरा तो काम नहीं हुआ. You never know कि वो आप हमारे साथ even on the day of showcase शायद आप थोड़ा सा और काम करके maybe in the last half an hour you can showcase your product. And this is what happens in real life. We do not strive for perfection, we strive for excellence. कोई चीज जिंदगी में perfect नहीं है. Perfection is a facade, but हम आपसे चाह रहे हैं कि आप excellence की तरफ strive करें, do your best, right? And enjoy yourself while doing it. Be immersive. Just, you know, उस काम में आप डूब जाएं और उस काम को enjoy करके अपनी gaming app develop करें. सही है? So I don't want anybody to stay back home just because you feel you're lagging on your work. We are going to help you out. ठीक है? So on premises, people, don't stay back. Come over every day. जी. जी, so before you leave, Fatima and Murtaza are going to help you और वो आपको add कर लेंगे group पे, ठीक है? Make sure you connect with Fatima. She is our intern. वो आपको add कर लेंगी on premises WhatsApp group पे. Okay जी, I think we will call it a day. It's a wrap from us. Thank you so much for being part of this और आपने इतने patiently बैठ के सुना है. But I want to assure you, workshops are not going to be sitting and listening. It's all going to be work and immersive work. ठीक है जी? तो आज ही का दिन था जिसमें आपने बैठ के कुछ lecture सुना है. Otherwise, the workshops are not going to be like this. You are going to be working hands-on because we have work to do, a deliverable to produce in 2 days and showcase that. So it's going to be lots of fun and lots of work to do, but I want a lot of enthusiasm. ठीक है जी? So hands up. A good round of applause for you. Are we revved up? Are we excited? Yes. Thank you so much. जी. बहुत शुक्रिया.